Okay, so we were doing To a Skylark by Percy Bysshe Shelley. Okay, so I think we had done. Let me give you a gist of the poem, what we have studied till now. How the poem begins. The poem begins with the speaker or the poet. The setting is that the poet is looking at a flying, a soaring uh, Skylark, and he starts contemplating about the bird itself. Okay. So first he describes the flight of the skylark. Flight of the skylark मतलब कि वो skylark कैसे जो है धीरे धीरे ऊपर आसमान में जा रही है and then it disappears into the clouds. But when it disappears into the clouds, then also the poet can hear the melodious song that she is singing. है ना? वो भले ही बहुत ऊपर चली गई है आसमान में लेकिन जो उसका सॉन्ग है that the poet can still hear. ठीक है? So this is how the poem began. Then the poet moves on. So I think how many stanzas? One, two, three, four, five, six. The first six stanzas they are a description of Skylark and its flight. ठीक है जो फर्स्ट सिक्स स्टैंजास हैं पोएम के वो क्या है वो एक डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब करते हैं कि स्काईलार्क जो है वो कैसी दिखती है नॉट पर से द बर्ड बट हाउ इट इज फ्लाइंग है ना कि वो कैसे ऊपर उड़ के जा रही है एंड द सॉन्ग दैट इट इज सिंगिंग और वो कैसा सॉन्ग गा रही है ठीक है then he tries to determine the nature of Skylark. He thinks that Skylark is something very unique, and therefore it is very difficult to find one object with which he can compare the Skylark. Okay, so he gives us a series of similes to determine the nature or to present before the readers the nature of Skylark. Okay, so the first simile that he brings before us is that he compares the skylark with a poet hidden. Okay, so a poet who is shy of the world, who lives in a very secluded place, and who composes beautiful songs. Okay. Then he compares the bird with a high-born maiden, maybe a princess, who is locked in a palace tower, okay, who is in a tower, and because she is separated from her beloved, she is singing songs which are full of love. Then he goes on to compare the bird with a glowworm. Glowworm मैंने आप लोगों को बताया था कल की glowworm क्या होता है? Glowworm is a insect जिसको आप क्या कहते हो हिंदी में जुगनू ठीक है so he also compares the skylark with a glowworm and also with a rose okay then he starts contemplating about the nature of the song that the bird is singing. Right? He wants to know the origin of the song, how she is able to sing sing in such a pure form of happiness. ठीक है जो उसके सॉन्ग्स में जो हैप्पीनेस है डिलाइट है जॉय है दैट सीम्स सो प्योर सो अनसलीट सो अनअडल्टरेटेड that the poet starts wondering what is she looking at? What is the inspiration of the bird so that it sings so beautifully? क्या इंस्पिरेशन है बर्ड का या वो कहाँ बैठी है क्या वो देख रही है जिससे जो है इतना अच्छा सॉन्ग इतनी इतनी हैप्पीनेस उसके माइंड में आ रही है जो कि उसके सॉन्ग्स के थ्रू
ट्रांसमिट हो रही है. ठीक है. This is the flow of thought. This is how the poem flows on. And then he starts thinking whether it is possible for a human being to achieve so much happiness. ठीक है. And finally जो है poet किस उस पे पहुंचता है. And also in between poet he requests the bird. है ना. Poet जो है वो pray कर रहा है bird से. क्या कर रहा है क्या pray कर रहा है कि वो उसे सिखाए कि वो कैसे इतनी happy है, कैसे वो इतने melodious songs जो है वो लिख रही है. सॉरी गा रही है. Teach us, है ना. Teach us, bright or bird, what sweet thoughts are thine. I have never heard praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine. Then he goes on to say, now this stanza, what objects are the fountains of thy happy strain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? ठीक है. So he is just brainstorming, है ना. कि जो है बर्ड क्या ऐसी चीज हो सकती है जिससे कि जो है स्काईलार्क के अंदर इतने हैप्पी थॉट्स है और वो इतने अच्छे सॉन्ग्स कंपोज कर रही है. ठीक है. सो ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग कि वो फाउंटेन्स के पास, सॉरी, वो फील्ड के पास है, वेव्स के पास है, माउंटेन्स के पास है, या वो स्काई को देख रही है, या फिर वो नीचे जमीन पे देख रही है ना, या फिर शी इज जस्ट सिंगिंग फॉर अदर बर्ड्स. बट वन थिंग दैट इज praiseworthy, that amazes the poet, is that these songs, they are completely ignorant of pain. Ignorant of pain meaning free of pain. ठीक है. पेन क्या होता है? What is pain? मैम दर्द. दर्द, है ना. किसी भी टाइप का पेन जो है उसकी वॉइस में नहीं है. Such pure form of happiness. The poet now starts thinking whether this kind of happiness, whether this state of bliss is possible for a human being to achieve or not. ठीक है. तो फाइनली जो है पोएट वो कौन से थॉट पे आता है कि जो है ये जो स्टेट है जिसमें एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें कि सिर्फ हैप्पीनेस है, किसी भी टाइप की पेन नहीं है, क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है? With thy clear keen joyance, languor cannot be. Shadow of annoyance never came near thee. Thou lovest, but never knew love's sad shading. Okay, so he is continuing the same thought. What ignorance of pain? With thy clear keen joyance, languor cannot be. What is languor? Languor is again a word for sadness. ठीक है. जो उसके अंदर जॉय है, that is untainted by sadness. Shadow of annoyance never came near thee. What is annoyance? ऐसी कोई भी चीज जिसको जो आपको इरिटेट करती हो, है ना, या जिसको देख के आपको गुस्सा आता हो, ऐसा लगता है कि ऐसी किसी चीज की शैडो तक भी जो है उस बर्ड पर नहीं पड़ी है. Thou lovest, but never knew love's sad shading. The bird knows how to love, है ना. And सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, किसी को कुछ कहना है? ओके. अगर आप लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लो. ठीक है. अगर आपको बोलना है आप तभी अपने आप को अनम्यूट करो. ठीक है. आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम. ओके. ओके. Thou lovest, but never knew love's sad shading.
Now the problem with human beings is that they know love, है ना? They can find love in their life very easily, but then they also know the pain of a love lost. बहुत दिन तक this was a perception of the romantics that love does not last for long. है ना? एक टाइम आता है या तो आप बोर हो जाते हो या फिर जो है आपको कोई और मिल जाता है या फिर जो स्लोली लव इरोड्स, धीरे धीरे क्या होता है, लव खत्म होता जाता है या फिर जो है द पर्सन यू लव माइट नॉट लव यू बैक. ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग्स नो द प्योर ब्लिस ऑफ बीइंग इन लव, बट दे ऑल्सो हैव टू फेस द पेन ऑफ अ लव लॉस. ठीक है, बट दिस डज नॉट सीम टू बी द केस विद द Skylark. Thou lovest, but never knew love sad shady. Uh, Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? Now he is thinking that perhaps the uh, human beings have a great fear of death. है ना? हमारे अंदर क्या होता है, एक फियर होता है किसको लेके, डेथ को लेके. वी ऑल नो दैट वी हैव टू डाई एट सम पॉइंट, है ना? और इस चीज का जो है डर हमेशा हमें लगा रहता है कि हमें इतने काम करने हैं और अगर हम नहीं कर पाए या फिर अचानक से हमारी डेथ हो गई तो क्या होगा. सो ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज लिव अंडर द शैडो ऑफ द फियर ऑफ डेथ. But the poet thinks that perhaps the Skylark, it has a deeper knowledge about death. It does not consider death to be a menace, a scare. ठीक है, उसको क्या लगता है कि जो स्काइलार्क है उसको जो डेथ की नॉलेज है वो हमसे ज्यादा डीप है और इसीलिए जो है उसको डेथ से डर नहीं लगता. एंड दिस इज this fearlessness that shows in her songs. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? जो जो उसके सॉन्ग्स की ब्यूटी है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज शी इज अ फियरलेस क्रीचर. We look before. Now this stanza is very important. Generally ये आपके reference to context में आता है, and also apart from this you will find that this is a very famous quotation from Shelley. आपको वैसे quotations भी जगह जगह लिखी दिखती हैं, कहीं लाइब्रेरी में जाते हो आप या इंटरनेट पे भी. सो दिस इज अ वेरी कॉमनली कोटेड स्टैंजा. और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी जो है जनरली ये बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको टिक कर लो. अगर ये पोएम आएगी तो इट इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि यही स्टैंजा आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, 100% आप नहीं कह सकते कि यही पूछा जाएगा, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजा एंड जनरली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत आता है. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. शायद ये आपने कभी पढ़ा भी होगा. We look now. He is comparing human life with the life of a bird. ठीक है, अभी आपने जो है स्काईलार्क के बारे में पढ़ा कि उसको डेथ का फियर नहीं है एंड हर हैप्पीनेस इज कंप्लीटली प्योर which is free of every kind of negativity. So now he is comparing this kind of life with the human life. Now, according to the poet, the human beings cannot ever be purely happy. ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कभी भी जो है प्योरली सिर्फ और सिर्फ खुश नहीं हो सकते. वी आर ऑलवेज अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस. जब आप खुश होते हो तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं देयर इज अ टिंज ऑफ सैडनेस. वी लुक, और क्यों है ऐसा? बिकॉज वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट. ठीक है, हमारी क्या आदत है ह्यूमन बीइंग्स की कि हम लोग सोचते हैं वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप जो है कहीं पे बैठे हो, आप कोई बहुत अच्छी मूवी एंजॉय कर रहे हो, बट
आप उसको फुली एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड जो है इट इज वर्किंग एंड यू विल कीप थिंकिंग कि अरे वो कल जो है असाइनमेंट, मुझे पता है आपको ऐसे थॉट्स नहीं आते होंगे, बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कल असाइनमेंट सबमिट करना है और अभी तक किया नहीं, है ना। या फिर जो है मुझे उसको फोन करना था, ये बात कहनी थी, मैंने अभी तक ये काम नहीं किया। हम्म, और वो कल जो है मैंने उससे बात करी थी, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, सो यू आर नॉट कंप्लीटली इन अ मोमेंट, यू आर ऑलवेज थिंकिंग बैक एंड फोर्थ। आप हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। हमारे माइंड में जो है हमेशा क्या चलता रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है। Our sincerest laughter with some pain is fraught। ठीक है, इसीलिए जब हम हंस भी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के कॉर्नर में क्या है, देयर इज सम सैड थॉट लर्किंग। Our happiness is never pure। Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts। और जो हमारे सबसे स्वीट सॉन्ग्स होते हैं, जो सबसे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, जो कि हमारे सैडेस्ट थॉट्स को बताते हैं। ठीक है, सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जब हम लोग बहुत सैड होते हैं तब ह्यूमन बींग्स के अंदर से म्यूजिक निकलता है ना। मोस्टली आप देखोगे जो बहुत सोलफुल सॉन्ग्स होते हैं, दे हैव अ टिंज ऑफ ग्रीफ इन इट, दे हैव अ टिंज ऑफ मेलेंकली इन इट। ना, जो आप कहते हो आप गजलें बहुत अच्छी लगती हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि जो उसमें एक टिंज ऑफ मेलेंकली होता है, दैट इज वेरी touching। ठीक है, so this is what the now the poet is comparing himself or the human life with the life of a skylark, and he finds that a human being cannot ever be purely happy, because we have a habit of overthinking everything, you know। We do not have the capacity to live in the present moment, and we keep on worrying about our past, and we are always apprehensive about our future। ठीक है, हमेशा जो है चिंता में रहते हैं कि हमारे साथ हमने पास्ट में ऐसा हुआ, और हमें हमेशा जो है ये इस बात की भी चिंता रहती है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन नेवर एंजॉय प्योर ब्लिस और हैप्पीनेस। Yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we should come near। ठीक है, but then he goes on, he extends this thought and says कि अगर human life से हम hate, pride, fear, scorn ये सब हटा भी दें, and if we were things born not to shed a tear, और हमें अगर भगवान ने ऐसा बनाया होता कि हमें कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ती, what he is trying to say, if we have the capacity that we are never supposed to cry, I know not how thy joy we ever should come here। उसके बाद भी शायद ह्यूमन बीइंग्स जो है वो स्टेट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। कौन सी स्टेट? द स्टेट ऑफ प्योर हैप्पीनेस। ठीक है, so what the poet is trying to say, that it is by default the human nature to be or rather the humans are not made to experience such a state of pure happiness as the bird experiences, and which is reflected in its song. Better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were, thou scorner of the crowned। Okay, so now what the poet is saying, we are towards the end of the poem. This is the second last stanza. So now he is trying to sum up all his thoughts. Um, he's saying that the skill that the bird has, the skill to be happy, it is better than all the treasures of the world।
ठीक है, जितने भी ट्रेजर्स है या नॉलेज है, हम्म, वो सब जो है क्या है, ये जो बर्ड के अंदर कैपेसिटी है टू बी हैप्पी, उसके सामने ये क्या हो जाते हैं, दे बिकम डल. Poet wants to achieve this state of happiness. Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then, and I am listening now. So he's requesting the bird, he's praying to the bird to teach him half the gladness. उसको पता है वो ये स्टेट, जो ये प्योर हैप्पीनेस की स्टेट है, वो अचीव नहीं कर सकता. तो वो बर्ड से क्या प्रे कर रहा है कि यू गिव मी जस्ट द हाफ ऑफ द हैप्पीनेस दैट यू हैव. अगर बर्ड उसको हाफ इतना भी सिखा देगी कि कैसे थोड़ा सा हैप्पी हुआ जाता है, तब भी जो है वो द सॉन्ग्स दैट द पोएट इज गोइंग टू क्रिएट, they would be beautiful. Okay. So poet, how the poet ends this poem by requesting uh, the skylark to teach him how to be so happy. Yeah, and he knows he cannot be so happy as the bird, so he says, "You just give me half the gladness." है ना, जो तुम्हारे पास gladness है उसकी half ही दे दो मुझे. Then he perhaps will write such songs that the world will listen to him as the poet is listening to the bird. ठीक है, वो जितनी इंटेंसनेस के साथ, जितने हैप्पीनेस के साथ वो बर्ड को सुन रहा है, तब जो है शायद लोग भी उसको इतने अच्छे से ही सुनेंगे. Okay, so this was the whole poem to a skylark. Um, the poem contains 21 stanzas. कितने stanza हैं अगर आप count करोगे, you will find that there are 21 stanzas in this poem, and all the stanzas are, they have a uniform structure with each stanza comprising of 5 lines. अब तक आपने इतना पढ़ा है तो आपने नोटिस किया होगा कि हर स्टैंजा में कितनी लाइन्स है. There are 5 lines in each stanza, and the first 4 lines are short and always the last line is longer. है ना, आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग की 4 लाइन्स हैं एक स्टैंजा में, वो छोटी छोटी हैं, और जो लास्ट लाइन है इट इज ऑलवेज अ लॉन्गर लाइन. ठीक है, सो अच्छा, देन दिस पोएम इज ऑल्सो एन ओड. हम लोगों ने जब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ा था, तब हमने देयर वाज अ पोएटिक फॉर्म व्हिच वी हैड स्टडीड, ओड. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ओड इज ऑलवेज एड्रेस्ड टू अ पर्सन और थिंग और प्लेस. ठीक है, किसी प्लेस को या पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस करके लिखी जाती है. ठीक है, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट टू व्हिच दिस ओड इज एड्रेस्ड टू? इट इज द स्काईलार्क. ठीक है, so this poem is an ode which is composed of 21 stanzas, and each stanza is composed of 5 lines, wherein the first 4 lines are shorter, while the last line, the fifth line, is a bit longer. Okay, so what is the uh, rhyme scheme? First stanza ko chhod do, you will get confused. You come to the second stanza. Higher still and higher, from the earth thou springest, like a cloud of fire. The blue deep thou wingest, and singing still dost soar, and soaring ever singest. ठीक है, तो अगर हम इस स्टैंजा को देखें, the rhyme scheme would be A B A B A B B. ठीक है, wherein higher and fire, हायर और फायर क्या है? हायर जो है आपकी फर्स्ट लाइन में है, फायर आपकी थर्ड लाइन में है, वो क्या है, आपस में राइम कर रहे हैं. ठीक है, देन स्प्रिंगेस्ट, विंगेस्ट, सिंगेस्ट, ऑल दीज 3 वर्ड्स आर राइमिंग. ठीक है, तो क्या हो गई, ए बी बी. तो आपकी जो राइम स्कीम है इस पोएम की, दैट इज, I'll write in the chat box, and someone please take the pics also. A B A B B.
ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है वो आपस में राइम कर रही है, देन सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सॉरी, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन्स आर राइमिंग विद ईच अदर। आप ये पूरी पोएम में जो है चेक कर सकते हो, यू विल फाइंड द सेम राइम स्कीम, ए बी बी। ओके, सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? What is the purpose? Why the poet wrote this poem? What was the purpose behind writing this poem? The poems of romantics are not overtly didactic. है ना, ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी है उससे आपको कुछ मॉरल सीखने को मिलता है ना। जैसे आप बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हो तो उसमें हमेशा क्या होता है कि जो है एंड में कुछ ना कुछ मॉरल होता है कि झूठ बोलना गलत बात है ना, या चोरी करना गलत बात है, हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, सो रोमांटिक्स डिड नॉट बिलीव इन द डायडैक्टिक नेचर ऑफ पोएट्री। उनको ऐसा नहीं लगता था कि जो है पोएट्री इसलिए लिखी जाती है कि कुछ लोगों को सिखाए, है ना। फॉर देम इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर इमोशंस एंड मे बी थ्रू through this expression they wanted to impart their philosophy of life to the people। ठीक है, वो जो भी उनकी पोएम्स हैं उनके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, अपनी जो उनकी लाइफ की फिलॉसफी है वो शायद रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सो व्हाट कुड बी, आपको ये पढ़ के